हम्म। Hello everyone. I think we are live. Already getting certain messages from a few students. I think once again the papers are on similar lines. Again, two DI sets. RCs be similar. We'll wait for Vidhan as well to join in. He will also give us more information. Meanwhile, anyone from slot 4, if you want to, uh, start putting anything with respect to what did you find? I heard that there are some maybe one puzzle also has come. Initial feedback से लग रहा है it is the easiest slot Yeah, because people have completed the paper before time, one two students initially, and easier than mocks again. No algebra and quants. I think cutoffs will be a little bit higher, which is fair enough. Once again, attempts and scores will all be normalized. So हमको सिर्फ हमारे slot के competition में ही top करना होता है. So there's no point in comparing with other slots. But yeah, I think very similar lines पे पेपर आया है as it was earlier in slot 1 and 2. We'll collate the review from students. Vedant sir will also be joining. He has appeared for the paper and he will be giving an analysis soon. तब तक I can see 48, 50 people on the stream. Guys, please subscribe. काफी effort लगता है ये every analysis के बाद. So, and we are very close to 30,000 subscribers. Around 1,500, 1,600 subscribers we need. So please, 40, 50 of you, please hit the subscribe button. It will be very helpful for us. हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है इस सबसे. Yes, the all the four slots have been easier than the test funda mocks. So the cutoffs will be higher. टेस्ट फंडा बॉक्स एंड टीटीबी बॉक्स दोनों से इजियर आया पेपर. Yeah. And I think clocks and calendars के first slot में थोड़े ज़्यादा questions आए थे. They also did not show up in this slot, I think. Again, students are आई थिंक हैव सिमिलर ओपिनियंस. वो लोग को अगेन स्लॉट इजी लगा बट थोड़ा लेंदी लगा. आई थिंक दैट हैज बीन अ पैटर्न सिंस द लास्ट 3 स्लॉट्स. इजी है बट लेंदी है. as I've been already, we all of us have been telling you that scanning the paper and selecting which questions to solve, the easier questions to solve basically first, would be a game changer mantra for you. uh, Again, इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चंस थे बट सिर्फ एक क्वेश्चन था.
तो सॉल्व करना नहीं करना, दैट इज इम्पोर्टेंट टू स्कैन, बिकॉज अगर 5 क्वेश्चंस होते हैं देन इफ यू आर सॉल्विंग देन इट मेक सेंस, बट सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सॉल्विंग, ओनली इफ टाइम अलाउज यू यू कैन, और इफ ऑप्शन एलिमिनेशन अलाउज यू कैन. And guys, all the questions are easy, but 3 hours किसी को भी पेपर मिलेगा तो everyone will attempt everything, but the question can be easy, but it can be time consuming. तो जो भी students बोल रहे lengthy है, you have to take feedback from that. The question can be easy, मतलब आप टाइम दोगे उसको तो हो जाएगा सॉल्व, बट क्या आपको क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट देने चाहिए? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस है पेपर में अपार्ट फ्रॉम दोज, इजी एंड फास्ट टू सॉल्व. सो इवन इफ यू सी एन इजी क्वेश्चन, if you think it's going to take a long time, 2 minutes, 3 minutes, so maybe you have to skip that and solve the other question, because the attempts are going 170, 180 by the students. तो जो 20 क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो, यू हैव टू एंश्योर कि वो लेंथी वाले हैं, इवन इफ दे आर डूएबल इजी. 180 क्वेश्चंस आपको अगर करने हैं तो you have to solve the fastest ones. I think all the 200 questions will be doable if people have time. Yeah, a lot of our students as well are mentioning that the paper went really well. I mean, that has been the case in the earlier slots also, but अभी के slot में I think कुछ students बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान था. तो maybe it could be one of the easiest slot. Maybe cutoffs will be 165, 160, 170 तक for JB obviously. But yeah, ज़्यादा से ज़्यादा I see a difference of hardly 5 marks in the all the slots का review that we have seen so far. Obviously, we'll wait for Vidhan to confirm that. But I think first 3 slots, more or less 150, 145 से 160 के बीच में 5-5 marks के gap में ही there have been that ranges. Rest all is similar. Like वो easy and lengthy वाला, easy to moderate and lengthy वाला ही review आ रहा है. So I am hoping the same follows for tomorrow also. But once again, we can never say never with CET. Yeah, I think once again people are saying that one of the easiest slot. So maybe 5 marks more. But good to see that एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हर एक स्लॉट में. ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आज के स्लॉट वाले ने कुछ और आके बोला, सुबह के स्लॉट वाले ने कुछ और आके बोला, एंड फर्स्ट 2 स्लॉट्स वाले ने दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. ऐसा नहीं है. We saw a lot of less surprises in the mocks so far, in the slots so far, which is one of the good thing. We saw a lot of consistency in the slot so far. I mean, number of RCs, number of DI sets, how the paper is. So that is also a good sign. So everyone, who is given the examination, did you also observe the same, the thing that I'm saying? And also students who are going to give, maybe it will help you feel a little bit less anxious because थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है कैसा बनने वाला है, एग्जामिनेशन आएगा, शॉर्ट्स कैसा होने वाला है. आई थिंक CTCL has positively taken the feedback this year. What do you feel, Aditya? Yeah, I think in terms of complaints on students, but बहुत कम आया है. I think we have over the 2 days heard just one complaint about the interface. थोड़ा I think hard है to read the questions, scroll करना पड़ रहा है. I think that is one ये. But again, guys, मतलब that is an issue for everyone. Uh, so don't worry about that. अगर आपका थोड़ा टाइम स्लो हो रहा है उसके वजह से रीडिंग द क्वेश्चन, दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द सेंटर ये सब काफी कम कंप्लेंट्स सुनने में आए. Yes. एंड क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चन पैटर्न, ये सब भी काफी, इट वाज एक्सपेक्टेड वॉट एवर द फीडबैक वी गॉट ओवर द 2 days की टेस्ट फंडा मॉक्स जैसे ही आ रहा है, PYQ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. So all the students who have prepared would have solved, and they would have been able to solve most of the questions. Yeah, I think a lot of students are also pointing out the fact that वो लोग पेपर को बहुत जल्दी फिनिश कर पा रहे हैं. आई मीन सर्टेन सेक्शंस पर्टिकुलरली फॉर दिस स्लॉट लाइक VA में, they're not spending a lot of time.
मतलब इतना लेंदी नहीं लग रहा है उन लोग को, विच इज अगेन अ गुड साइन, बिकॉज रीडिंग 200 क्वेश्चंस 1 to 200 विद इन 150 minutes टेक्स अ लॉट ऑफ टोल, एंड उसमें अगर पेपर लेंदी आ गया तो आप बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो गुड रिव्यूज फ्रॉम स्टूडेंट्स सेइंग कि इतना ज़्यादा रीड करने के लिए भी एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगा। So that is also very good point. I'll be collating some more information from few of our good performing students. Just within a couple of minutes, it will be there, and then I'll read it out for you. Guys, till then, now more people have joined the chat. 70 of y'all. Please subscribe to the channel, like the stream. Help us get to 30,000 subscribers soon. Thank you. I see that some of you have started subscribing, Amazing. So I and we got are getting closer to the goal of 30,000 subscribers. yes, it will be amazing if we do it before the second attempt. But yeah, coming back, I got the analysis from one of our students. I'll just give you a brief overview. So, in terms of LR, uh, I am getting a review that there were two questions that may be incorrect, that were contradicting themselves. So, if there are incorrect questions in LR, in puzzles, for example, you will be getting marks for that. So, there was a very easy puzzle, and two incorrect questions were there which were contradicting themselves. There were critical reasonings. I think there were singlets, blood relation. There was no input output. Analogies के questions थे. In VARC में there were three RCs only, not four RC as in slot 1 and 2 and 3. Three RCs of 5 questions each, and there were grammar, vocab words. Once again, no parajumble, no parasummary. Uh, there were some vocab based analogies as well. In abstract reasoning, once again counting figures वाला pattern continue हुआ है, and series वाले questions है. QA में there were two DI sets, one was bar graph and one was pie chart. Arithmetic में time speed distance, profit and loss, time and work, mixture and allegations, ratio proportions. So pretty constant in all of the slots, I would say, arithmetic वाले, and two DI sets. So that's like easily close to 50% से ज़्यादा पेपर, दो DI set भी, पाई चार्ट एंड पाई चार्ट भी अरिथमेटिक ओरिएंटेड ही रहेगा, तो 50% आपका पेपर अरिथमेटिक का ही है, और वो भी कुछ गिने चुने टॉपिक्स लाइक टाइम वन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक्स है। परसेंटेजेस इसके ऊपर आप फोकस करें तो आप क्वांट्स इजीली टैकल कर सकते हो इन सीटी एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स हु आर अफ्रेड ऑफ क्वांट्स में भी लिस्ट I've listed out the topics, इसके ऊपर फोकस करना will be beneficial for you. And I think parajumble भी नहीं है, तो that's once again a good sign. No more stress about PJs, para completion, para summary once again बहुत लेंदी होता था, वो भी नहीं डाला है उन्होंने इस बार। vocab based, grammar based ज़्यादा क्वेश्चन है, तो which are fact based क्वेश्चन। so because vocab and grammar में आपको अगर फैक्ट पता है तो आंसर पता है, नहीं तो नहीं पता है, तो you do not tend to spend a lot of time in these particular topics. So once again, that is also one of the reasons why students are attempting these sections faster. And ultimately, yes, सब जो भी आप टाइम सेव कर रहे हो, that you have to use an LR, because वो easy है but lengthy है, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है, that is I think a gist that I'm getting. So yeah, this is the review. We'll wait for a couple of more minutes so that we get a review from Vidhan as well. So one of our students, Abhishek, has given this review. So thanks, Abhishek, for that. Uh,
one of the I'll just easiest. answer this question about JB hostel facility होता है लड़कियों के लिए. Yes. There is a video on the TTP YouTube channel. बॉयज हॉस्टल के लिए वीडियो है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए वीडियो है कि कौन सा हॉस्टल है, कितनी फीस होती है, लोकेशन क्या है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. So you can check that out. But yes, if you are from not from मुंबई, थाने, नवी मुंबई, कल्याण, मतलब मुंबई रीजन के बाहर से अगर आप हो, मेल, फीमेल, एंड even the other programs, MHRD, MSc Finance, students are also eligible for the hostel. लिमिटेड सीट्स होती है, मेरिट पता जाता है, मेरिट पे मिलता है सीट्स. सो एवरी ऑल द डिटेल्स आर इन द वीडियो, यू कैन चेक इट आउट. Girls and guys, there is a video for that. Again, all of the students saying paper were lengthy was maybe because it was easy and there were so many easy questions to attempt that you felt that it was lengthy. Uh, but yeah, so paper was lengthy. Okay, maybe primarily in LR that could have been the case where a lot of questions have only one question, but the question is itself is big. So that was also a reason why you could call it lengthy. Should okay. I think good attempts for this paper, students खुद ही बोल रहे, तो I think that makes it the easiest paper. 180, 185 people have genuinely attempted. As I mentioned before, couple of students have finished the paper before time, 2-3 minutes before time, which I've not heard in the previous slots. So seems to be the easiest paper. And remember guys, ये सब जिसका पेपर हो गया है, no one has actually taken all the 4 slots, so it's just an opinion कि कौन सा easier है, कौन सा harder है, ये सब. uh, Finally तो we will have to wait for the answer key, response sheet, and the results. Well, I think everyone, are also saying that RCs were so easy that, जिन्होंने skimming करके RC solve किया, they were at an advantage. इन्होंने बिल्कुल भी, पूरा read नहीं किया. So that is something that I noticed in first slot as well. Like बहुत ज़्यादा read करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. So probably that is one thing slot 5 and 6 students can keep in mind. Uh, See, a lot of students are saying कि lengthy है, but these are the things that make a difference. Are you reading an RC when many students are skimming the RC and still getting the answer? उससे सोचिए आपका कितना टाइम बच सकता है, राइट? क्वेश्चंस में ट्रैप्स है. लाइक फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस लॉ देयर वाज एन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन दैट इज लेंथी टू सॉल्व. एक ही क्वेश्चन था उसमें. आर यू सॉल्विंग दैट और आर यू नॉट सॉल्विंग दैट? अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको लेंथी लगेगा वो सेक्शन. बट इफ यू लीव दैट देन एंड अटेम्प्ट द अदर इजियर क्वेश्चन, तो लेंथी नहीं लग सकता. तो डू कीप ऑल दिस इन माइंड when you're going for the paper. Slot 5, slot 6 guys. RCs, there is a high chance that काफी easy आए, like the first 4 slots, and you don't have to read it जैसे आप कैट में करते हो. पूरा RC पढ़ के, understanding the tone of the passage, understanding the author's opinion is probably not necessary. आपको skim करके मिल सकते हैं answers. Correct. Just a correction from my side, I mentioned 3 RCs earlier, but again, there are 4 RCs only in this. So 4 RC का pattern, 2 DI का pattern follow हो रहा है. That itself is like 30 questions of the paper already. हम लोग को पता है कैसे strategize करना है, कैसे work करना है. So good that all 4 slots have continued that.
So it's beneficial for the students going in slot 5 and 6. They can be more calm and composed. At the same time, I've been also hearing from a lot of students that जितने भी mocks दिए हैं उन्होंने, चाहे हमारा टीटीपी के दिए हो, टेस्टफंडा के दिए हो, आईएमएस टाइम जिसका भी मॉक दिया है, उनको वो मॉक से एग्जामिनेशन थोड़ा इजियर लग रहा है. So, I mean, that is also one of the, pointers that everyone should make a note of that. Mock जो हम देते हैं थोड़ा always difficult side पे ही रहता है. Examination generally tends to come a little bit easier, which was obviously not followed in the earlier years by CET, but this has been followed this time. And since there are not a lot of differences in each of the slots and not a lot of complaint, I think, and plus there is a second attempt as well for CET. So this levels out a lot of playing ground for everyone. मतलब जिन्होंने मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जिन्होंने सिर्फ टीटीपी के ई बुक्स भी अगर सॉल्व किया होता है, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है हर टॉपिक के, जिसमें 50 to 100 क्वेश्चंस है, they could have easily attempted maybe 150 plus in this kind of paper. So इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि आप बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे तो ही जाके आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट इंक्रीज कर पाओगे इन दिस एग्जामिनेशन. बट आई थिंक इवन इफ यू सॉल्व नॉट ओनली टीडीपी बुक्स, एनी ई बुक्स, एनी मटेरियल, एनी बेसिक मटेरियल्स. Yeah, I think we are also joined by Vidhan. So Hi guys, hi. Am I audible clearly? yes, you are. Yes, So yes. guys, मैंने analysis किया है question wise. I'll tell you some नए type के questions also that I've seen and Okay. कितने कितने questions आए थे, क्या क्या तुमको prepare करना चाहिए जो हो सकता है higher probability of coming tomorrow. So firstly I'll start with LR. तो मैंने कुछ नया देखा इसमें था set words in meaningful sequences. So for example तुमको दिया हुआ है illness, doctor, consultation, recovery. तो इसको सीक्वेंस में डाल के आंसर मार्क करो. तो वैसे आई हैव सीन समवेयर अराउंड 5 क्वेश्चंस. ठीक है. ऑड वन आउट के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, मोस्टली स्क्वायर्स थे उसमें. 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर नहीं था, तो दैट यू कैन मार्क. सीरीज के काफी क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन सीरीज के थे. पीएनसी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. एक मैट्रिक्स टाइप का था जिसमें कोई कोई में लेटर्स है, कोई कोई में नंबर्स है, एंड दे हैड आस्क्ड यू कि फाइंड द मिसिंग लेटर और द नंबर्स. ठीक है. फिर वैसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें डॉलर हैशटैग दिया है विच मींस डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे 4-5 क्वेश्चन थे. डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चंस थे. डायरेक्शन सेंस के 5 क्वेश्चंस. ब्लड रिलेशंस 5 क्वेश्चंस. देन वेरी छोटे छोटे पजल्स टाइप के जैसे लीनियर एंड सर्कुलर बट सिंगल क्वेश्चन, सिंगलेट्स. कंक्लूजन्स पूछा था, 2 क्वेश्चंस कंक्लूजन के थे. एक क्वेश्चन था पजल का. आई वुडेंट कॉल इट अ पजल, बट जैसे लाइन में लिख दिया है 5 QUVW 3 9 ऐसे पूरे लाइन में दिया एंड 5 क्वेश्चंस ऑन दैट. सो कैसे कि मतलब वावल्स Ranking. के आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स है, नंबर्स है, वो गिन के बताओ. इवन नंबर्स का एडिशन कर दो. वेरी बेसिक क्वेश्चंस. वर्ड के रिलेशंस थे कि मतलब अगर तुमको एक वर्ड दे दिया उसके बाद एक और वर्ड लिख दिया, तो यू हैव टू फाइंड की रिलेशन क्या है, मतलब एंटोनिम है, सिनोनिम है, एंड देन फिर एक और वर्ड दिया एंड देन फाइंड अनदर वन. अल्फाबेट्स लिख लेना ABCDEFGHIJ के भी पूरा, क्योंकि उस पे काफी क्वेश्चंस है. डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग 3-4 क्वेश्चंस. सिंगलेट्स भर भर के. ओवरऑल LR वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. ठीक है. तो LR का बता दिया मैंने. मूविंग ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट सीरी, वेरी इजी अगेन एब्स्ट्रैक्ट. सीरीज की क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बहुत ही जल्दी थे. ऑड वन आउट के 3-4 क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट अगेन डूएबल. एंड एक डायग्राम दे दिया तुम लोग को जिसमें बोला है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस देख लिए. Counting तो figures. काउंटिंग फिगर्स, दो Okay. तीन क्वेश्चंस उसके हो गए. So guys, that was LR and abstract. Moving on to quants, easy to moderate. DI के 10 क्वेश्चन से 2 sets. One was bar graph, very easy. Another one was pie chart, again very easy. कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Squares and cubes से 4-5 questions. PNL 5-6 questions. Averages 3-4 questions.
टाइम एंड वर्क 5 क्वेश्चंस, टीएसडी 4 क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 2-3 क्वेश्चंस, वेरी बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, एज के क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन सेंस वो तो मैंने बोल दिया था, एलआर में था, करेक्ट। तो थोड़े ना परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं ना, उनके लास्ट डिजिट्स को याद रखो, जैसे कि 149650, ये सब ही होता है। तो एक क्वेश्चन था जिसमें काफी क्वेश्चन से पूछा था कि परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसमें सिर्फ अगर तुमको ये चीज भी पता हो ना, तो यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर, बिकॉज अदर्स वर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, बिकॉज लास्ट के डिजिट उसमें एंड होते ही नहीं है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे मार्क दैट आंसर। तो क्वांट्स वाज इजी टू मॉडरेट। मूविंग ऑन टू वर्बल, वर्बल गाइज थोड़ा प्रॉब्लम था वर्बल में, बिकॉज भर भर के vocab, approximately I would have seen around 12 questions in vocab, idioms के 6 क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव के 3-4 क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 3-4 क्वेश्चंस, ग्रामर के 6 क्वेश्चंस, दो दो 4 RCs थे, 4 RCs, एंड ईच RC हैज गॉट 5 क्वेश्चंस, बट अगेन वेरी डुएबल। एंड उसमें भी काफी vocab का पूछ लिया, बट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द RC, तो मैनेजेबल, बट थोड़ा वही vocab idioms का प्रॉब्लम था, बिकॉज टू मच वेरी हैवी। तो बस मुझे उसमें ही लगा प्रॉब्लम, बाकी सब तो वेरी डुएबल, वेरी इजी, 160 प्लस इजी। परफेक्ट। आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली मेरा भी यही एनालिसिस था आफ्टर आई लिसन टू यू। वो एलआर का जो क्वेश्चन यू मेंशन वर्ड सीक्वेंस वाला, दैट वाज देयर एग्जैक्टली इन माय स्लॉट। सिंगलेट पजल्स, अल्फाबेटिकल रैंकिंग, करेक्ट। सीरीज, काउंटिंग फिगर, 2DI, प्रॉफिट एंड लॉस के, अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चंस, एंड 4 RCs. So I think this is a fixed pattern in the all 4 slots. And similarly, even I had, I think, mentioned 160 तक. So sort of similar, maybe 4-5 marks का आगे पीछे कट ऑफ रहेगा, is what I feel. हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच क्वेश्चंस टुमारो, बट अगेन कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जो प्रेपरेशन है वो वैसे ही तुमको सब अटेम्प्ट करना है, जो जो मैंने नए क्वेश्चंस बोले या जो जो बोले दिमाग में रखने के लिए, जस्ट कीप दोस थिंग्स इन माइंड। बाकी तो आई थिंक इट शुड बी वेरी डूएबल, जस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू। बाय द वे, आज मेरा सिस्टम 2 बार बंद हुआ, Okay, बट उसमें कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, दे मेड मी चेंज द सिस्टम, उधर से ही वापस चालू हुआ। सब शीट्स देते हैं वो लोग, पेन नहीं दिया मुझे ये वाले सेंटर में, सब पेन लेके जाओ। मैं अपना फोटो भी नहीं लेके गया था, मेरे को लगा सिर्फ ओरिजिनल आईडी प्रूफ है देना, तो मैं बाजू के जेरोक्स शॉप से फोटो भी निकाला मैंने, तो फोटोज भी लेके जाओ, एक फोटो लेके जाओ बस। बाकी तो यार easy question. I interacted with a few guys also over there, some students who knew about DDB, and they had also told me that the paper was very easy for them. okay. So do you think like सारे slots का similar review आ रहा है? अभी तक तो यस, Yes. So कल that's, का I देखते think. हैं क्या एंड हो। लॉट ऑफ, डिड यू ऑल्सो सी कि कुछ कंप्लेंट्स है स्टूडेंट्स के? मतलब जनरली हर साल ऐसा होता था कि एग्जाम के बाद बहुत केओस एंड कंप्लेंट्स रहता है हर जगह पे, तो सेंटर में डिड यू फील समथिंग लाइक दैट? नथिंग, नो chaos, नो complaints, नथिंग। पेपर ही इजी था यार, थोड़ा इधर उधर भी आ गया अगर वर्बल क्वांट्स का एलआर में, तो भी पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज द पेपर इज वेरी इजी। परफेक्ट। तो हाँ गाइस, बस वो थोड़े नए क्वेश्चंस एक बार देख लेना जो जो मैंने बोला है, एंड देख के डरना मत, बिकॉज सब बहुत इजी है। बस शांत दिमाग से इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, यू कैन क्रैक इट लाइक दिस। Perfect. So I think that summarizes slot 4, and now hoping for slot 5 and 6. So I think Aditya, you're in slot 5, right? Yes, yes. So tomorrow we will have morning में one more review, एंड देन विल नो कि सब सेम हो रहा है या स्लॉट 5 एंड 6 वालों के साथ कुछ धोखा होने वाला है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए एट दिस पॉइंट, बिकॉज 4 स्लॉट्स हैव बीन ऑलमोस्ट सिमिलर। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है अटेम्प्ट्स में स्टूडेंट्स के ओपिनियन से, एंड अगेन विधान एंड मेरा ओपिनियन ऑलमोस्ट सिमिलर लगा मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ स्लॉट का। सो इवन द क्वेश्चंस ही मेंशन्ड इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड आल्सो रिटन। सो गुड दैट सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोइंग। गाइस, एंड छोटी छोटी चीज के लिए
लिख के टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चन जो सिर्फ देख के आंसर तुम दे सकते हो. तो प्लीज सेव सम टाइम ऑन दैट सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द टफर क्वेश्चंस इन क्वांट्स एंड मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, बिकॉज बहुत क्लोज होने वाला है. सबको इजी लगेगा तो ये जो दो चार टफ क्वेश्चंस है ना क्वांट्स के, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. एंड Correct. वर्बल में भी मुझे लगता है वो कैब जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट वुड गिव देम एन एज. अगेन आई डोंट नो हाउ विल इट बी टुमारो, बट डू सम कैलकुलेटेड गेसेस. थोड़े वर्ड्स जो तुमको पहले से पता होंगे विच वुड साउंड और लुक सिमिलर, तो उसके अंदाजे से ट्राई टू मार्क इट. Perfect. एंड व्हाट आर द अदर स्टूडेंट्स सेइंग जिसका हमको फीडबैक आया है, आवर स्टूडेंट्स? Same. I think I asked a couple of students. They mentioned कुछ students obviously वो बोल रहे हैं कि मॉक से बहुत ज़्यादा आसान था. टीटीपी मॉक से टेस्ट जो भी मॉक्स उन्होंने दिया उससे इजी था. And again, even in our chat, everyone has mentioned easy to moderate only. अभी तक nobody has mentioned any slot being tougher or difficult. हर कोई easy to moderate and lengthy यही mention कर रहा है. तो I think that has been constant. लेंदी तो मेरे को फिर भी नहीं लगा, एंड मॉडरेट भी मतलब मेरे को सिर्फ प्रॉब्ली एक सेक्शन लगा, दो सेक्शन लगा है, क्वांट्स एंड वर्बल. वर्बल आल्सो बिकॉज ऑफ vocab एंड idioms हर बार कहते हैं इसलिए, वरना तो क्या? एवरीथिंग इज वेरी मैनेजेबल. एलआर तो गाइस मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स इन एलआर. पूरा एक एक क्वेश्चन सही आना चाहिए. Perfect. So, as you mentioned, using option elimination, क्वेश्चन से डरना नहीं है. इजी क्वेश्चंस पहले ही करना चाहिए. बहुत ज़्यादा न्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, जो है वो लॉजिकली आंसर किए जा सकते हैं. आरसीज है जो स्किम करके ही उसका आंसर्स निकाल सकते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो कैब थोड़ा हैवी है, तो वो कैब के जो भी नोट्स बनाए होंगे वो कर लेना चाहिए. डीआई वंस अगेन नॉट वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव. प्लस यू मेंशन क्वांट्स में नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, क्यूब्स, अगर और लिखे भी रखा हो या फिर ऑलरेडी याद करके रखा हो तो दैट हेल्प्स. प्लस एलआर में ए टू जेड लिख के नंबरिंग लिखोगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस. आई थिंक थोड़े दैट. थोड़े रूल्स याद कर लेना स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के, बिकॉज काफी बड़े नंबर्स है जिसमें वो लोग जैसे कि पूछ लेते कि विच वन ऑफ दीज इज अ परफेक्ट क्यूब, विच वन ऑफ दीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो थोड़े वो रूल्स पढ़ लेना, दैट वुड हेल्प यू. तो उधर ज्यादा डर नहीं लगेगा. एंड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग हर एक नंबर के साथ कि विच इज क्लोजेस्ट, तो उसे मगजमारी नहीं करनी है. एंड Yeah. इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे क्या? एक एक नो इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस. ओके, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. आई थिंक मेरे सॉर्ट में वो एक ज्यादा था. हम्म. नो इनपुट. But- एंड बेसिक पीएनसी प्रोबेबिलिटी गाइस, मतलब तुम लोग ने छोड़ा भी होगा ना, तो बस इतना कर लो कि मतलब अगर सपोज 20 लोग हैं रूम में, तो कितने हैंडशेक्स होंगे, तो 220 C2. ये सब तो बेसिक चीजें याद कर लो, क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस एंड इजी मार्क्स है. वेरी बेसिक. आई थिंक वो हम लोग का ईयर राउंड एडवाइस रहता है कि प्लीज डोंट लीव एनी टॉपिक. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल इन एन इजी पेपर, बिकॉज हर टॉपिक से आएगा बट इट्स गोइंग टू बी एकदम बेसिक लेवल का, which is again how CET usually is easier than CAT, easier NMAT, SNAP का level, or easier than that also at par with CMAT level. So the questions are going to be easy. If you have not left any topic, बस basic level पे किया है तो you are going to be at a big advantage. राइट. करेक्ट. आर देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एस्पिरेंट्स जिनका कल परसों कल स्लॉट है और 5th 6th? आई थिंक दे आर I don't think आस्किंग. there are any हाँ. questions. Shrikant, maybe you can tell about the last batch that you're starting this weekend. Yeah. So जिसका भी based पेपर. on correct, based on whatever information that we have received in the first four slots and the next two slots that we will happen tomorrow, we will be starting a batch from 11th of April, and this will be more focused towards the type of questions that we saw in these particular slots. ये 6 slots में जो type के questions आए, जो topics ज़्यादा है, उनके ऊपर sessions होगा. And once again, we are not going to start from scratch. Zero से हम लोग नहीं पढ़ाएंगे. This will be a sort of a revision or a crash course sort of a situation because there will only be around 30 days. So our focus will be
mentoring you for the next 30 days. We'll be taking mentorship sessions, plus we'll be taking workshop sessions on all of the important topics that you should focus on. And once again, as Aditya also mentioned, even I would want to mention, अगर आप हमारे ई बुक्स के बेसिक क्वेश्चंस भी करके गए होते, सिर्फ प्रैक्टिसेस भी करके गए होते, जैसे विधान ने बोला पीएनसी का, तो भी आप मतलब इवन इफ यू आर अफ्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू कुड हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चंस. So having a good material and good direction is something that is really important. So we'll be starting the batch this Saturday. So if you're interested, you can enroll, obviously. And yeah, I think that is it from our side today. Yeah, guys, सबका पेपर काफी अच्छा गया. If you're we are not sure कि result कब आएगा. So if you wait for the results and then you are looking to prepare अच्छे से for the second attempt, then that might be a little late. Our advice is कि एक दो दिन का break ले लो. Start preparing either self study से या you can join the TTP batch from this weekend and prepare hard for the second attempt, assuming कि first attempt तुम्हारा अच्छा नहीं गया हो. Because you know the cutoffs for GBIMS, uh, although the slots are equal, basically normalization in CET works in a way that आपको अपने slot में top 5 या top 10 ranks में आना पड़ेगा for JBIMS, no matter the difficulty. कैसा भी slot हो, easier हो, tougher हो compared to each other, it's just your slot that matters. So, and the margins हमें पता है बहुत tight रहने वाले हैं. Paper easy है, is going to be 165 170, कुछ भी हो सकता है. It's going to be really high. Every mark is going to count. So do start preparing for the second attempt. Guys, and reiterating, we don't mark in CET. हम लोग सिर्फ पेपर देख के आते हैं, unlike other professors. So even if you see that, just tell us hi. And हम लोग पे सोचने की जरूरत नहीं, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा स्लॉट तो खराब नहीं हो जाएगा. No one is marking anything. Yes. Yeah, we are not going to take your ranks. हम लोग वो top 10 top 20 जो ranks चाहिए आपको JBIMS के लिए, उसमें नहीं आने वाले हैं. So Aditya is already All India rank 5. He has no more aspiration to go over that. So कल अगर आदित्य आप लोग को दिखेगा सेंटर पे, तो just remember to say hi to him. आदित्य And सेंटर बता दे तेरा, so that even if anyone's coming over there, तो My center is KB International School in Charkho, Carco. Kandivali. nice. So if anyone is there, would love to meet you after the exam. Okay, that's it from us, guys. Again, tomorrow also post the slots. We'll be live post 5 and 6. And जिसका भी हो गया है first 4 slots में just take a break and relax.